So we start with the next part, the history of the Java. In 1991, Sun Microsystem is a developing company. This developing company team leader is James Gosling. The team is headed by James Gosling. They have a project to solve or to give a solution, or they develop a software for a electronic customer electronic consumer electronic device. Okay, so सी गोटे कंज्यूमर माने जेमति कि गोटे रिमोट कंट्रोल भलिया गोटे मशीन बनैला गोटे कंपनी, से कंपनी चाहिला ए कंपनी ए सॉफ्टवेयर कंपनी ठारो से माने एमिति गोटे सॉफ्टवेयर बनैबे जो सॉफ्टवेयर टा तांकर डिवाइस रे इंस्टॉल हे जिवो. So James Gosling and team thinking for that, at that timing the C and C++ is a model language. तो C आउ C++ language नहीं कि से माने गोटे सॉफ्टवेयर बनैले आउ से सॉफ्टवेयर टा को नहीं कि जेतबे से माने से डिवाइस रे इंस्टॉल करिया को चाहिए से डिवाइस रे इंस्टॉल हेई पाला नहीं, because there is a some kind of ambiguity features are present. So the team is thinking for that they have to develop another programming language which is fitted with in any type of device. So they give its name as oak. The oak is a tree in USA which gives coffee. The entire developer team is thinking for that for this good quality of coffee, they able to develop this particular software or particular software. So they give its name as oak. The oak is a tree in USA which gives coffee. As they thinking for that for the good quality of coffee, they able to develop this particular language. तो जेतरे C और C++ को नहीं के से सॉफ्टवेयर टा डेवलप करके इंस्टॉल करे सेटा हेई पाला नहीं, तो सेते बेले कस्टमर जो कंज्यूमर जो डिवाइस देइतिला सी ताऊ चाहिबे नहीं जे जे पर्टिकुलर गोटे सॉफ्टवेयर टा को इंस्टॉल करिया पे तांकर डिवाइस टा को चेंज करिवे. तो से माने तांको टैक्स देले. तो से टीम आमे चिंता करले जे आमे गोटे एमती सॉफ्टवेयर बनेबा जोटा कि बा गोटे एमती लैंग्वेज बनेबा जो लैंग्वेज टा जे कोनोसी डिवाइस रे चाहिबो सेटा इंस्टॉल हेई परिबो. तो से समय से माने से लैंग्वेज टा बनैले बाय यूजिंग ऑफ C and C++ आउ ता ना देले ओक. ओक इज ए ट्री इन USA व्हिच गिव्स कॉफी. तो ये जो एंटायर एप्लिकेशन एंटायर प्रोग्राम जेतबे बनैले तो डेवलपर टीम गोटे कैफेटेरिया रे बसी के से प्रोग्राम टा बनैतले. So they think for that for this good quality of coffee they able to develop this particular language so that they give its name as oak. आउ जाभा रो तमे जेतला आइकन देखिबो सेटा प्लेट आउ कप सिंबल रहितला, हॉट कॉफी सिंबल रहउतला. तो इनिशियली ता ना रहिला ओक, तो लेटर सेटा चेंज हे गला जाभा को. एटा हला जाभा रो इवोल्यूशन आसिला केमती. So in 1990 Sun Microsystem developed a software to manipulate electronic device. Sun Microsystem कौन कले ना गोटे सॉफ्टवेयर बनैले for manipulating the electronic device. A new language named oak was introduced using most popular object oriented language C++. In 1993 www appeared on the internet that transformed the text-based internet to the graphical internet. Okay, so in 1994 the Sun Microsystem developed a web browser called as Hot Java to locate and run the applet program on the internet. So later Oak was renamed to the Java. So Java was established as a object oriented programming language after that. So Oak was renamed to the Java. So Java was established as an object oriented programming language in 1996. So what are the characteristics are present in Java? So Java is simple, it is object oriented, compile and interpreted, portable,
distributed and secure. So why it is simple? Because if you're talking about the C++ programming language, for memory management we're using constructor. The constructor, for memory management we're using pointer concept. But in the Java, the pointer concept is removed and the memory management is automatically going on by using of constructor and destructor concept. Okay, so there is no headache for a person or for a programmer for the memory management. बुझे होची आयुष सिरकी देखो सिंपल अर्थ होची कोन आमे जो सी प्रोग्रामिंग रे पढुथिले कोन पॉइंटर कांसेप्ट पॉइंटर कोन होतला ना हमर वेरिएबल रो वैल्यू टाको स्टोर करिया पई बा कोनोसी वैल्यू स्टोर करिया पई आमे आउ गोटे लोक को दउथिले आउ गोटे लोक को धर मु रहिछि हम घरे मोर घर एड्रेस केमती जणा पड़ियो मु प्लॉट नंबर देबी किंतु ये कहता सी प्रोग्रामिंग कौन करथला ना मो घर एड्रेस जणा पे मु आउ गोटे सिक्योरिटी गार्ड को रखी तू मते जे पचारियो तू डाकी आनी की मते देखियो ताले सिक्योरिटी गार्ड को मते पैसा दाउ पड़ियो माने एक्स्ट्रा मेमोरी रहिला तो सी प्रोग्रामिंग से बळा करथला माने मेमोरी मैनेजमेंट पई से गोटे पॉइंटर कांसेप्ट यूज करथला किंतु जाभा रे आ से पॉइंटर कांसेप्ट रहिलानी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हैला बुझि पाइला यस सर सेठी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर रहला जाभा रे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर रहला जे के कोन करिवो ना ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करिवो जोटा कि हमें आगु पढिबा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर तापरे पढिबा हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कांसेप्ट पढ़ले जेमते कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज ए मेथोडोलॉजी व्हिच इज यूज्ड टू डेवलप द मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जावा सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच टू डेवलप द प्रोग्राम तापर हमें यूज कले कौन कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड तो जावा इज यूजिंग the two type of compiler, one is compiler, another is interpreter. So what is the work of interpreter? Suppose you are writing 100 lines of code, मु 100 टा लाइन रो कोड लिखिली इंटरप्रेटर कोन करिवो गोटे बेली गोटे करके चेक करिवो को लाइन ने मोर एरर अछि जो लाइन ने मोर एरर थिबो सेठी से स्टॉप हेजि ओके तापरे हमर सॉल्यूशन दबो तो गोटे चेक करिवा माने भलो गोटे चेक करी पसौची किंतु जदि मु 100 टा लाइन कोडिंग लिखिची 99 नंबर लाइन रे जदि मोर एरर आसिला 99 नंबर लाइन रे जदि मोर एरर आसिला देन मोर कंपाइलेशन अगेन पुनी बिगिनिंग रु स्टार्ट हो पुनी मूल को पळेयो माने जहा परिश्रम करथिली पुनी से तले मूल को पळेयो पुनी कंपाइलेशन करी आसीयो এই জায়গায় আমি ইউজ কলে কোন না কম্পাইলর ইউজ কলে কম্পাইলর কোন করিব सपोज मु प्रोग्राम टाको एग्जीक्यूट करी आसिले 99 नंबर लाइन रे मोर एरर आसिला तो सी आउ बिगिनिंग को जीवने जोठी रहिला सेठी मोर सॉल्यूशन बाहर करिवि ता परठु से एग्जीक्यूट करिवो तले मोर कोन हला ना टाइम टा सेव हे गेल तो जावा एठी कोन कला ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर दीटा जिंसटी से यूज कला बुझेला यस सर तापर हैला पोर्टेबल refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code माने हमें कोडिंग किछि चेंज करिवा नहीं it refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code आउ एठी चेंज होबनी हमें धर गोटे सॉफ्टवेयर बनेबा से सॉफ्टवेयर टा में रन करबा को जगह रे ना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रे मु रन करबी और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रे मु बनेबी ताको नै कि मु गोटे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रे रन करबी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रे रन करबी तो से जगह जे रन करबी मते किछि एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड एठी लिखिबा को पड़ियो नाही तो पोर्टेबल रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम टू रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म without changing the source code of a program
source code मते एठी चेंज करिया को पड़िबो नै portable it refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code of a program तापर एठी देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु एठी कोन कली ना मो फाइल टा को सेव कली .java फाइल तापर आमे यूज कले कोन जावा कंपाइलर कोन करिवो से .java फाइल को .class फाइल ले कन्वर्ट करिवो जेतबे से .class फाइल ले कन्वर्ट करूची तो JVM कोन करिवो ना विंडो पई विंडो मशीन कोड रे कन्वर्ट करिवो यूनिक्स पई यूनिक्स मशीन कोड रे कन्वर्ट करिवो मासिनटोक पई मासिनटोक ऑब्जेक्ट कोड रे कन्वर्ट करिवो फर्स्ट मु जावा प्रोग्राम टा को स्टोर करिवि विथ द एक्सटेंशन ऑफ .java फाइल जावा फाइल टा को मु स्टोर करिवि with the extension of .java तो by using of java compiler मु ताको byte code रे कन्वर्ट करिवि byte code रे कन्वर्ट हैला परे JVM कोन करिवो ना ताको जे विंडोज पई थिवो विंडोज मशीन कोड रे कन्वर्ट हबो यूनिक्स पई थिवो यूनिक्स मशीन कोड रे कन्वर्ट हबो अगेन मु आउ थरे कहूची जते बेले हमें जावा प्रोग्राम लिखिबा ताको .java फाइल ले स्टोर करिवा तो कंप्यूटर कोनोसी लैंग्वेज जाई न थाए कंप्यूटर केवल जानी थाए 0 and 1 फॉर्मेट आमे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिवा बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो व्हेन यू कंपाइल योर एप्लीकेशन इट कन्वर्ट टू द बाइट कोड इज नथिंग बट इट इज 0 and 1 फॉर्मेट तो एठी जेंति कि पीएम मोदी गले हिंदी रे भाषण देले तापर से भाषण टा कन्वर्ट हे गला कोठी यूनाइटेड नेशन रे भाषण देले सेटा कन्वर्ट हे गला का दरे इंग्लिश रे तापरे सबु देशर ट्रांसलेटर रहिले रूसिया रे गोटे ट्रांसलेटर रहिला अफगानिस्तान रे गोटे रहिला तापरे फ्रांस रे गोटे रहिला तो एठी रूसिया रे जेटा रहिला से कोन कला रशियन लैंग्वेज रे कन्वर्ट कला अफगानिस्तान ने से उर्दू रे कन्वर्ट कला फ्रांस रो फ्रेंच लैंग्वेज रे से कन्वर्ट कला तो सेमती एठी जेता बेला हमें बाइट कोड रे कन्वर्ट कले डिपेंडिंग अपॉन माय ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम रे मते कोन आउटपुट देखेइबो तो से हिसाब रे जेवीएम कोन कला ना से टाइप रो जेवीएम हमर सब यूज होला जेवीएम टा कोन जेवीएम टा होची इंजन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वर्चुअल मशीन जेते बेले कोनोसी प्रोग्राम में लिखुचे सेटा कोन होची जेमति हिंदी हो ओडिया हो तार सब डिक्शनरी रे सब लिखा जाउची बा ग्रामेटिकल रूल रहउची सेमति जावा प्रोग्राम रे हमें कोन लिखिबा ता सिंटैक्स एमिति रहिबो कोन रूल सब फॉलो करिवा सेरा सब जाक डिफाइन हेतै कोठी जेवीएम रे तो जेवीएम is ultimately called engine of Java where all rule and regulation for writing the Java program is defined in the JVM बुझियला yes sir and the Java compiler name हमें जो Java program लिखिबा ता compiler name होची Java C is the compiler name next होची हमें यूज करिबा distributed तो Java is designed for distributed environment for the internet because it support various internet protocol such as the TCP and IP distributed environment तो ऑलरेडी मु डिस्कस करिछि जे हमें जेता बेले एप्लीकेशन बनेबा हमें 3 टायर आर्किटेक्चर बनौछे गोटे सिंगल टायर गोटे 2 टायर गोटे 3 टायर जो 3 टायर आर्किटेक्चर बनेले तो एठी डिस्ट्रीब्यूटर आर्किटेक्चर माने हमें जावा एप्लीकेशन को यूज करके सिंगल टायर पाई एप्लीकेशन बने परिबा बा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बने परिबा वेब एप्लीकेशन बने परिबा जोटा कि इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन आउट हैला इंट्रानेट केवल गोटे ऑर्गेनाइजेशन पाई हमें बने परिबा एटा को आजीबो हमर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा एबे हमें पढिबा टीसीपी एंड आईपी कोन तो देखो एई जो पर्टिकुलर समय रे लॉट ऑफ आवर यूजर are requesting for the Facebook तो ये प्रत्येक सेकंड रे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आर प्रोसेस बाय द फेसबुक तो गोटे समय रे जते बेले हमें सर्वर को रिक्वेस्ट पठाउचे से सब रिक्वेस्ट को कोन करिवो ना हैंडल करिवो कोडा को डिनाय करिवो जेतरा हैंडल करी के ताको कोन करिवो ना गोटे छोटो छोटो पैकेट रे कन्वर्ट करिवो मु रिक्वेस्ट पठेली www.facebook.com फेसबुक को सर्वर को रिक्वेस्ट गला परे से कोन करिवो हमर सब रिक्वेस्ट को गोटे छोटो छोटो पैकेट रे कन्वर्ट करके गोटे रो रे पकई दबो तो एट ए टाइम 5 जन लोक रिक्वेस्ट पठेले 5 जन को रिक्वेस्ट को कोन करिवो छोटो छोटो पैकेट रे कन्वर्ट करके गोटे क्यू रे पकई दबो सो एवरी पैकेट contain
the sender address and receiver address. सब पैकेट रे कौन रहे किए रिक्वेस्ट पठाउची रिक्वेस्ट कोठी के जीव ये सब गोटे गोटे क्यू रे रहिबो आको वेरीफाई के करिथाय ना टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आमे जते बेले रिक्वेस्ट पठाइबा से हमर ट्रांसमिशन जो रिक्वेस्ट को कोन करिवो ना गोटे क्यू रे पकेबो आईपी होची इंटरनेट प्रोटोकॉल इट इज द एड्रेस ऑफ योर मशीन आमे जो डिवाइस रो रिक्वेस्ट पठाउचे सी कोन करे ना समस्तकर आईपी एड्रेस है जिते बेले कौन से डिवाइस सहित इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाए सब डिवाइस रो गोटे आईपी एड्रेस आसी जाए से आईपी एड्रेस थ्रू रे आमे कनेक्टेड करिवा गोटे ला डिस्ट्रीब्यूटेड तापर आमे यूज करिवा कोन सिक्योर तो जावा इज ए सिक्योर लैंग्वेज तो जावा हैज built in security feature that verify that program do not perform any destructive tasks such as accessing the file on the remote system. এটা বুঝিলা ডিস্ট্রিবিউটেড এটা বুঝিলা Yes, sir. তারপর এলা সিকিউর জাভা has built in security feature that verify that the program do not perform any destructive tasks such as access the file on the remote system. Okay, so has built-in security feature that verify that the program do not perform any destructive tasks such as accessing the file on the remote system. अर्थ होचे मु जदि आमे एबे कनेक्टेड हेचे केमते वर्चुअली कनेक्टेड हेचे तो we are not presented physically but we are virtually connected and we are doing the classes. Now if you want to here I have the rights to share my screen so that it is visible to you. तो जदि तमे रिक्वेस्ट तमे जदि चाहिबो तमस के जो स्क्रीन टा को शेयर करिया पई सो आई हैव टू गिव ए परमिशन जदि मु समस्त को परमिशन दे देबे आ समस्त शेयरिंग करिवे दैट मींस मु जहा देखेबा को चाहूची मु जो पढे को चाहूची पढै परिबेनी सो देयर इज ए डिस्टर्बेंस तो जावा रे सेमती थाए जदि आमे जावा ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट रे नबा आ वर्क करिवा आमे कोनोसी डिस्ट्रक्टिव वर्क करि परिबा नाही बा वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन आमे सब सिस्टम को रिमोट रे नहीं परिबा टीम व्यूअर रे कोन हुए ना आमे गोटे डिवाइस को आ गोटे डिवाइस से रिमोट रे नहीं थाउ रिमोट रे नेले कोन हबो ना मु स्क्रीन टा को देखि परिबी बट आई कैन डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ओवर देयर तो जावा इज बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर that verify that program do not perform any destructive tasks such as accessing the file on the remote system. Now the various component of Java architecture, Java programming language and class file. First the Java programming language and class file, and another architecture is called the JVM, Java application programming interface or Java API. Java program are saved with the extension of .java. तो Java program गुड़ा को हमें save करिवा with the extension of .java. .java file is compiled to generate .class file. तो Java program जहाँ भी रहिला हमें ताको save करिवा with the extension of .java. तापर Java file compiled हबो compile है कि से ताको create करिवा .class file को it only contain the byte code. Then JVM convert the byte code contained in the .class file to the machine code object. The first आमे जते बेले जावा प्रोग्राम लिखिवा ताको स्टोर करिवा .java file तापर आमे ताको कंपाइल करिवा कंपाइल कला परे सेटा .class file क्रिएट हो तापर JVM कोन करिवो ना कन्वर्ट द बाइट कोड जो बाइट कोड ता थिबो ताको से कोन करिवो मशीन कोड रे कन्वर्ट करिवो तेते पई आमे JVM टा को सब जगह रे और सब प्लेटफॉर्म रे हमें स्टोर करिया को पड़िबो बाइट कोड इज नथिंग बट इट इज ए 0 and 1 format and it is understandable by any devices सब डिवाइस ता को बुझी पारिबे इट इज ए 0 and 1 format बुझेला Sir, yes, sir. see that so here we store the file with the extension of .java by using of Java compiler it is converted to the byte code and byte code to the machine code it is converted
by using of Java interpreter. Java interpreter convert the bytecode to the machine code. So that we are using JVM. JVM form the base for the Java platform and it is convenient to use on various hardware based platform. सब हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म रे आमे यूज करिवा JVM. तो JVM जदि अछि आमे जेकोनोसी डिवाइस रे जावा फाइल को रन करि परिबा. JVM रे तीनोटी फीचर रही छे. गोटे हला क्लास लोडर, गोटे हला एग्जीक्यूशन इंजिन, आ गोटे हला JIT कंपाइलर. अच्छा क्लास लोडर रो काम कोन? तमे सी प्रोग्रामिंग रे आमे पढिथिबा stdio.h. जेता बेले आमे लिखुचे stdio सेता बेले कोन हुए ना हमरा printf आ scanf लोड हे जाय. मने रखो ए जो JVM रो क्लास लोडर एक्चुअली काम कोन? जेता बेले आमे लिखिबा stdio से समय रे हमरा printf आ scanf ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रे रन हे जिवो. मु जदी तुमको टैक्स दउची that you have to only display data on the screen, किंतु जेहेतु मु stdio.h लिखुची ऑटोमेटिक printf and scanf लोड हे गला, किंतु मोर scanf रो कोनोसी रिक्वायरमेंट ही नहीं, किंतु scanf ऑटोमेटिकली एठी लोड हे गला. तो एठी अर्थ होची कोन ना मोर अननेसेसरी scanf लोड हे गला. किंतु जावा रे जदी मु केवल डिस्प्ले करिया चाहूची गोटे डाटा, मु गोटे प्रोग्राम लिखिले हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करिया पई सी प्रोग्रामिंग रे एंड जावा रे जेता बेले प्रोग्राम डेटा को मु सेव करूची सी प्रोग्रामिंग रे सेटा हला 2 केबी, जावा प्रोग्रामिंग रे हला 2 केबी. किंतु आफ्टर कंपाइलेशन सी प्रोग्रामिंग हे जो 10 केबी, किंतु जावा प्रोग्रामिंग हो 3 to 4 केबी रहबो. काहे कि ना जावा इज ओनली लोडिंग द पर्टिकुलर क्लास व्हिच इज रिक्वायर्ड एट रन टाइम. जावा डजंट लोड द क्लासेस व्हिच डजंट रिक्वायर एट रन टाइम. माने से एमिति कोनोसी क्लास को से लोड करिवने जोटा कि हमर रन टाइम रे दरकार नै. तो JVM form the base for the Java platform and it is convenient to use various hardware based platform. The major component of JVM are class loader, execution engine जेमते कि Java फाइल टा को बाइट कोड रे कन्वर्ट करिवा, बाइट कोड रो मशीन कोड रे कन्वर्ट करिवा, ए सब काम होई थाए एग्जीक्यूशन इंजिन सेटा देखि थाए. जस्ट इन टाइम कंपाइलर. अच्छा जस्ट इन टाइम कंपाइलर काम कोन ना बाइट कोड को जेता बेले मो मशीन कोड रे कन्वर्ट करिवि से समय मो यूज करिवि JIT कंपाइलर. तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर बाइट कोड टू द मशीन कोड एट दैट टाइमिंग आई एम यूजिंग JIT कंपाइलर. बुझियला? Yes, sir. आयुष बुझी होची? आयुष सोइबे लगी? आयुष नेक्स्ट होची देखो जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. द जावा API is a collection of software component that provide capability such as GUI application. Java API or Java application programming interface, it create a graphic user interface to create a GUI application. The related class and interface of the Java API are grouped into the packages. The Java user interface define करिवा को हेले जो सब related class and package दरकार Java API सेटा provide करे. तो Java the related class and interface of the Java API it is grouped into the packages. हमें graphic user interface design करिया पई जहाँ भी tools सब दरकार से tools कौन करे Java API हमको provide करे. Next है Java architecture consists of following security features. One is compiler level security, bytecode verifier, class loader, and sandbox model. Java architecture consists of the following security features that make the Java secure programming language. First is compiler level security, bytecode verifier, class loader, and sandbox model. So now check for it. Compiler level security. Java prevent error that arise due to the improper memory uses.
it reducing the compile time error. अच्छा आ अर्थ होची कोन जदि मु एठी दुईटा वेरिएबल डिफाइन करूची सपोज मु डिफाइन कले एठी int a is equals to 10 int a is equals to 10 गोटे इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कले सी प्रोग्रामिंग कथा कहूची जावा रे भी रहिबो int b is equals to 2 मु जेते लिखिबी int c is equals to a by b ताले सी मते रिजल्ट शो करिवो केते ना 5 किंतु जदि मु जो c जगह रे 3 पास करिवि ताले मते रिजल्ट आसीबा कथा केते ना 3.33 किंतु floating error मु जदि int जेहेतु एठी डिफाइन करूची मु एठी int जेहेतु डिफाइन करूची ताले मोर कोन हबो ए जो 0.33 वैल्यूटा एटा मोर लॉस हे जीवो इट इज ओनली शोइंग यू 3 जदि खाली 3 देखौची ताले मोर पॉइंट वैल्यूटा एठी लॉस हे गला तो जाभा कहूची जे जदि एभला कोनोसी सिचुएशन आसे मोर वैल्यूटा लॉस हबनी at runtime I can convert one data type to the another data type मो runtime रे java रो कोनोसी वैल्यू लॉस हबनी by using of compiler level security we can convert one data type to the another data type by using the feature of typecasting. So typecasting in Java ensure that there is no data loss in the result or output of the Java code. Bytecode verify এটা বুঝিয়ালা compiler level security. yes sir Then bytecode verifier it ensures that the bytecode doesn't violate access restriction such as read and write operation. The bytecode verifies that the bytecode doesn't forge pointer. एटा देखो आमे जते बेले कोनोसी जावा प्रोग्राम टा को रन करिवा सेटा कोन हबो कन्वर्ट हबो डॉट क्लास फाइल ले which contain the bytecode. जदि किए भी आसे के bytecode को कोनोसी प्रकार रो चेंजेस करबा को चाहूची बा किछि मॉडिफिकेशन करबा को चाहूची तला हमें मॉडिफिकेशन करि परिबा नाही काहे कि ना bytecode is not allowed to do any kind of modification or you have to use any kind of pointer over there. So when you are using bytecode, so bytecode is verified in the two phases. Bytecode ta duita way verify over. In first phase, the verifier checks the structure of the dot class file. आमे तरा प्रोग्राम लिखिबा से चेक करिवो अकॉर्डिंग टू द JVM स्पेसिफिकेशन मोर प्रोग्राम रो स्ट्रक्चर करेक्ट अछि कि नै जदि करेक्ट अछि सेकंड लेवल फेज रे कहबो द सेकंड लेवल फेज occur when the bytecode is run and bytecode verifier checks the validity of the class टा को कोठी यूज करि परिबी वेरिएबल टा को कोठी यूज करि परिबी मेथड टा को कोठी यूज करि परिबी the second level phase occurs when the bytecode is run the bytecode verifier checks the validity of class variable and method used in a program कोठी मु यूज करिवेटी रहइबो माने validity of the class कोठी यूज होबो variable कोठी यूज होबो function कोठी यूज होबो second level phase रा आसीबो फर्स्ट फेज रे कोन होबो ना JVM चेक करिवो जे JVM स्पेसिफिकेशन अनुसार बा जावा रा रूल अनुसार मोर प्रोग्राम टा करेक्ट लिखा हिची कि नै सेकंड लेवल फेज रे से देखिवो आमे जो भी मेंबर्स सब डिफाइन करूचे प्रोग्राम टा जोडा बनाउचे से प्रोग्राम रा मेंबर्स माने सेटा कोठी यूज हे परिबो सेटा सेकंड लेवल फेज रे चेक होबो बुझियला बाइटकोड वेरीफायर रे yes sir yes sir आयुष तुम एते लेट रे रिप्लाई दोछो तुम एते थरा डाकलिनी सर चलची तो जो कथावार्ता फैमिली रे ओके तापर देखो क्लास लोडर रा वर्क होची कोन the class loader determine how and when an applet will use classes in a running Java environment. Okay, class loader कौन करिवो जेंति मु कहली
Java is not loading the unnecessary class. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିବି stdio.h ତାହେଲେ ସେ printf and scanf automatically load ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ Java ରେ unnecessary class load ହୁଏନି। Java କଣ କରେ, जो class ଟା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର it is only loading the particular class at runtime. Sandbox model. The sandbox model is implemented in the Java applet container such as web browser. Sandbox model ର କାମ କଣ ଥିଲା ନା, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ web application କୌଣସି network based application बनाउଥିଲେ, ଗୋଟେ client server ରୁ information ଟାକୁ retrieve କରି ପାରୁଥିଲା। One client retrieve the information from the server and one client cannot access the information from another client. ଗୋଟେ client ଆଉ ଗୋଟେ client ଠାରୁ information access କରି ପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟେ client server ଠାରୁ information access କରି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ client ଆଉ ଗୋଟେ client ଠାରୁ server access जो information access କରି ପାରିବ ନାହିଁ। Sandbox model କଣ କଲା, ଗୋଟେ feature ଆनला, जो feature थ्रू रे कौन हबो, आमे client रो information भी आनी परिबा और server रो भी आमे information आनी परिबा। Sandbox model is implemented in the Java applet container such as web browser. Sandbox model determine the limitation of Java applet that they can only access the resources of the host computer, cannot access the file on the local computer. माने आगरो जदि आमे नेटवर्क रे रहिबा लोकल कंप्यूटर रो फाइल टाको एक्सेस करि होबो नै, एठी लोकल कंप्यूटर रो भी फाइल टाको आमे एक्सेस करि परिबा by using of sandbox model. The next होची garbage collection. Garbage collection is a process that is used to free the memory of the object that are no longer in use. Garbage collection feature implies that the new objects are created and all unreferenced objects are deallocated from the memory. माने आमे जो variable जो function आमे define करिबा, जो memory allocate करिबा, तार work सरला परे से memory आमे occupy करिबा नहीं, से memory टाको आमे free कर दबा। तो ये जो automatic free करिबा को जो process टाको कुहा जिबा garbage collection. When a program stops referencing an object, it is not required anymore, that can be deleted. जेतेबेले कोनोसी object, when the program stops referencing an object, कोनोसी program reference को stop करिवो, it is not required anymore, can be deleted. The space that is used by the object is released for use by the another object. जो space टा से occupied करतिबो, से space टा से ताको free करिवो. Garbage collection feature implies that the new objects are created and all unreferenced objects are deallocated from the memory. Garbage collection feature होची कोन ना, feature implies that the new objects are created and all unreferenced objects are deallocated from the memory. माने जो memory जो object टा memory रे दरकार नहीं ताको से free कर दो. It implies that it create a new memory and all unreferenced objects are deallocated from the memory. So it is a process of garbage collection. The different approaches of the detecting the garbage collection are reference counting collector, tracing collector, and compacting collector. The different approaches of the garbage collection is reference counting collector. माने केतेटा एमिति ऑब्जेक्ट अछि जोटा कि हमर दरकार नहीं, सेटा रेफरेंस काउंटिंग कलेक्टर हो। ट्रेसिंग करिवो, जो ऑब्जेक्ट हमर दरकार नहीं ताको ट्रेस आउट करिकि रिमूव करिवो। कॉम्पैक्टिंग कलेक्टर एका संगरे जो जो ऑब्जेक्ट गुडा अछि जोटा यूज हो नै ताको कलेक्ट करके रिमूव करिवो। तो एटा हला हमर गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस। तो काली हमें स्टार्ट करिवा डाटा टाइप कोन कोन डाटा टाइप सब अछि। अच्छा सलोनी काली केतले रखिबा 12 रखियो ना रात्रि रे करिवो? सर काली 11:30 रे एग्जाम अछि, से एग्जाम टाइम शेड्यूल चेंज कर दै चंदी आज। अच्छा अच्छा नेटवर्क इशू हैला सरीबो केबे एग्जाम? सर काली राती संध्या टाइम रे आपण जेतेले फ्री हेबे सर सेतेले रखले चलेबो। हमर एग्जाम केबे आप सरीबो? तो पहर दिन सर। अच्छा ठीक है। आयुष से पर दिन जाय हमर एटा ऑनलाइन रे चलिबो, काली को तो गोटे दिन तापर हम मंडे रे स्टार्ट करिबा। तो काली ऑनलाइन आगे सर ए 17 जो 8:45 से करिबा। आगे थैंक यू सर।